International Anti-Money Laundering Watchdog FATF blacklists Pakistan for its failure to meet global standards. FATF's affiliate Asia Pacific Group downgrades Pak's financial status. Prime Minister Narendra Modi begins his tri-nation tour with a one-to-one meet with the French President Emmanuel Macron in Paris. President Macron says J&K is a bilateral issue and no third party should interfere. Hopes for peace and stability in the region. Prime Minister Narendra Modi thanks France for cooperation in fighting terrorism. First Rafale jet to be delivered to India next month. Prime Minister Modi and President Emmanuel Macron discuss a host of issues, including the Jet Apur project, climate change, digital and cyber security. Prime Minister to address the Indian community at the UNESCO headquarters in Paris, will dedicate a memorial to the Indian victims of the two Air India crashes in France in the 1950s and 60s. Prime Minister Modi to also meet France Prime Minister Charles Philippe. President Ramnath Kovind addresses the first World Youth Conference on the theme Vasudhaiva Kutumbakam, Gandhi for the Contemporary World. Says Mahatma Gandhi brought transformational changes and his universal ideas influenced many leaders. And in sports, India to resume the first innings at the overnight score of 203 for 6 against West Indies on the second day of the opening test in Antigua this evening. Ajinkya Rahane top scores with 81. Good afternoon. Headlines at 12:30. I'm Anil Thomas. Now for the stories in detail, starting first up with news from Prime Minister Narendra Modi's visit to France. Prime Minister Narendra Modi will address the Indian community at an event at the UNESCO headquarters in Paris on day 2 of his France visit. A memorial for Indian victims of two Air India flight tragic air crashes of 1950 and 1966 will also be inaugurated. Meanwhile, further cementing the relationship with France, Prime Minister Modi on Thursday held a bilateral meeting with the French President Emmanuel Macron. The two leaders discussed on a wide-ranging issues from terrorism to skill development. Making its stance clear on the Kashmir issue, France said it was a bilateral issue between India and Pakistan. The French president also expressed happiness over the delivery of the first Rafale jet by September. On Monday, the Prime Minister will be attending the G7 as a Barrett's partner. The warmth at the airport as a cross-section of the Indian diaspora in Paris turned out to greet their Prime Minister. And then came the meeting of two friends, President Emmanuel Macron playing host to Prime Minister Narendra Modi at the historic Chateau de Chantilly. The two leaders walked around the estate with Macron, explaining the historic significance of the chateau to PM Modi and took him around the centuries-old building. The two leaders then held a one-on-one interaction. Terrorism figured high on the agenda. हम दोनों देशों को आतंकवाद और रेडिकलाइजेशन का लगातार सामना करना पड़ रहा है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मुकाबला करने में हमें फ्रांस का बहुमूल्य समर्थन और सहयोग मिला है। इसके लिए हम प्रेसिडेंट मैक्रो का धन्यवाद देते हैं। हमने सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म पर सहयोग को व्यापक बनाने का इरादा किया है। मैरीटाइम और साइबर सिक्योरिटी में भी हमारे बढ़ते सहयोग को और मजबूत करने का फैसला भी हमने किया है। PM Modi and President Macron also discussed the Kashmir issue. President Macron assured Prime Minister Modi of France's support to India's stand. He called for restraint and dialogue to ensure peace and stability. Well, we are now taking across to live visuals there from Paris, where the Indian Prime Minister Narendra Modi is meeting the French Prime Minister. These are live visuals that are coming before you. Indian Prime Minister meeting the French Prime Minister there.
the photo up just before they head into the meeting there. Those were live visuals there from France, where the Indian Prime Minister there on a three-nation tour, first beginning with France, then heading to UAE and then Bahrain, and then coming back to France for the G7 summit. Well, we'll give you more updates on that particular story. Now let's talk to our correspondent Shailendra Mishra there, who joins us this afternoon from Paris. Shailendra, the significance of the Prime Minister's visit to Paris and the three-nation tour that he undertakes. बिल्कुल अनिल थॉमस, हम जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस का दौरा। कल काफ़ी देर तक फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई, जब साझा बयान हुआ उसमें दोनों। Okay, live visuals there of the two leaders meeting. Well, the Prime Minister there will be met the France Prime Minister Charles Philippe, and then will have a breakfast meeting also with the French Prime Minister. Earlier we still got Shailendra with us. Shailendra, what's the indication that this particular visit of the Prime Minister does to France? Is it a shift in priorities and partnerships that India is sending a message across to the world? अनिल, दो तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। फ्रांस एक अहम सहयोगी है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर। 1998 के बाद देखें तो 2 दशक से ज़्यादा हो गया, जहां पर तमाम अहम क्षेत्रों में फ्रांस और भारत के बीच सहयोग बढ़ रहा है। चाहे वो डिफेंस की बात, हम जानते हैं कि राफेल इसी साल आने वाला है, और चाहे अंतरिक्ष में सहयोग की बात हो, या फिर उससे आगे जाकर तमाम क्षेत्रों में जो वैश्विक चुनौतियां हैं। अगर आप बात करें सोलर अलायंस के लिए फ्रांस और भारत के बीच हुआ कि सौर ऊर्जा को लेकर न केवल भारत और फ्रांस में बल्कि दुनिया भर में एक तरह से सहयोग करके काम किया जा सकता है। तो दरअसल नए नए क्षेत्रों में फ्रांस और भारत किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक समान विचारधारा रखते हैं फ्रांस और भारत, चाहे आतंकवाद के खिलाफ हो मिलकर चलने की बात हो, या फिर तमाम अहम मसलों पर जो चुनौतियां हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर, उसमें किस तरह से भारत और फ्रांस की एक अहम साझेदारी से वैश्विक चुनौतियों से निपटा जा सकता है। उस नए नए क्षेत्रों, नए नए आयामों में सहयोग को बढ़ाने पर सहमति हुई है। हम जानते हैं कि अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय के जो लोग हैं उनको यूनेस्को के जो सभागार है उसमें संबोधित करने वाले हैं। बड़ी संख्या में फ्रांस से लोग यहाँ पर अलग अलग दूर दराज के इलाकों से यहाँ आए हुए हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। लंबी लंबी हमने कतारें देखी, बाहर सुबह से ही उत्साह का माहौल था। भारतीय समुदाय के जो लोग जहाँ फ्रांस में रहते हैं, जो अलग अलग भारत के राज्यों से यहाँ आकर बसे हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे साथ काफ़ी सारे लोग यहाँ पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे सुनने के लिए उत्सुक हैं, मुझसे जानते हैं। आप बताइए क्या कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? Shailendra, the Prime Minister at this point of time meeting the French Prime Minister. आ रहे हैं तो काफी एक्साइटेड थे उनसे मिलने के लिए इंडिया में। Well, Shailendra, you still with us? Shailendra, give us, is this a cementing of the fact that, France has been, a close associate, has emerged as the most consistent partner for India at the United Nations, also in many tricky situations that India has been. So, is that a cementing of fact that the Prime Minister is made this visit, and he also met the French President, now meeting the French Prime Minister? बिल्कुल, आप देखिए, हम जानते हैं कि G7 में विशेष तौर पर भारत को आमंत्रित किया गया, और ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह से जो भारत की एक बढ़ी हुई भूमिका है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और जिसका जिक्र कल फ्रांस के राष्ट्रपति ने किया भी, कि जो तमाम जो अहम मुद्दे हैं जिसमें G7 में चर्चा होने वाली है, चाहे क्लाइमेट चेंज की बात हो या बायोडाइवर्सिटी की बात हो, और भारत के बिना उन चुनौतियों के बारे में उनसे कैसे निपटना है वो एक चर्चा नहीं हो सकती। और यही वजह है कि भारत को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया। जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में सदस्यता को लेकर फ्रांस भारत का समर्थन करता रहा, और तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चाहे वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात हो, एक तरह से फ्रांस और भारत के समान विचार रहे। और इसका जिक्र भी कल की जो है बयान में किया गया कि किस तरह से तमाम अहम मूल्यों पर भारत और फ्रांस एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, एक दूसरे पर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यही वजह है कि हम जानते हैं कि UAE और बहरीन के दौरे के बाद एक बार फिर फ्रांस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं G7
की बैठक में हिस्सा लेने, और उससे पहले द्विपक्षीय बातचीत रखी गई और उसमें तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। अब से थोड़ी देर बाद भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे और साथ ही साथ 1950 और 66 में जो विमान हादसा दुखद हुआ था और जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई थी, उसमें उन्हीं जहांगीर भाभा जो भारत के महान परमाणु वैज्ञानिक थे, उनकी भी मौत हुई थी 1966 के विमान हादसे में। तो उनके याद में जो यहाँ पर एक स्मारक बनाया गया है, उसका भी यहीं से अनावरण करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो निश्चित तौर पर एक बहुत अहम लम्हा है कह सकते हैं, और यही वजह है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए भारतीय समुदाय के लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। आप एक ये तस्वीर लेकर आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्या कहना चाहती है, क्या संदेश देना चाहती है? मैं श्वेता जोशी, इंडिया से, पंचकुला से मैं यहाँ पे फ्रांस अपनी कर्म भूमि पर अपने प्रधानमंत्री जो हमारी जन्म भूमि से आ रहे हैं, सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई जस्ट वांट टू थैंक हिम and by this gesture of love and the respect we all have for him by doing they have done a lot of for us our Indian community recently जो धारा 370 और धारा 35A जो उन्होंने हटाई है और जिसके तहत हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं जो पहले डर के रहती थी और अभी वो खुलेआम सर उठा के जी पाएंगी, और जो हमारे कश्मीरी भाई हैं जो पहले एक सौतेला होने का एहसास फील करते थे बिकॉज दो दे वर पार्ट ऑफ इंडिया बट स्टिल दे वर स्टेइंग अवे। तो ये बिल्कुल आप उनके तरफ से और पूरे हिंदुस्तानियों की तरफ से मैं उनको धन्यवाद करती हूँ। और जब मुझे पता लगा कि वो आ रहे हैं तो मैंने अपने कला के माध्यम से ये एक उनका चित्र बनाने की कोशिश की। बिल्कुल, ये देखिए इस तरह से भारतीयों के प्रति प्रेम है अनिल, जिस तरह से लोग कला के माध्यम से यहाँ पर दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। अनिल, तो निश्चित तौर पर ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह से भारत और फ्रांस के बीच जो सहयोग है वो बढ़ रहा है, किस तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि फ्रांस में जो भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं, हम जानते हैं 1 लाख से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं, उनकी जो अलग अलग क्षेत्रों में जो भागीदारी है, व्यवसाय में, सीमित तौर पर राजनीति में भी है, वो किस तरह से फ्रांस में अपना योगदान कर रहे हैं और पीपल टू पीपल जो कॉन्टेक्ट है उसकी जो बात हो रही है। और ये पूरा सभागार आप खचाखच भरा है, आप देख सकते हैं, और कितना उत्साह है। आप इन चेहरों को देखें यहाँ पर किस तरह से उत्साहित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए, और किस तरह से हमारे कैमरामैन लोकनाथ यहाँ पर दिखाएंगे कि किस तरह से लोग यहाँ बात करना चाह रहे हैं, किस तरह से उत्सुक हैं बात करने के लिए। एक कुछ और राय जान लेते हैं। आप देख रहे हैं कि लोग बात करना चाह रहे हैं, आपसे जानेंगे क्या कहना है भारत में जो बदलाव को लेकर, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? और आज का दिन बहुत ही प्राउड फील करने वाला दिन है। जो भारत से प्रधानमंत्री आए, ये उनका सेकंड सेशन है, और ये सेकंड सेशन के बाद हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इंडियन लोग किस तरह से प्राउड फील करते हैं और किस तरह से उनका रुतबा बढ़ा है जो इन देशों में। और जब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग इंडिया से हैं, द पीपल लुक एट अस वेरी डिफरेंट वे, दे थिंक वी आर वेरी एजुकेटेड एंड वेरी डिजिटल पीपल। सो थैंक्स टू नरेंद्र मोदी जी। लोग एक बदले हुए नजरिए से देखते हैं अनिल, खासतौर पर जो पिछले 4-5 वर्षों में भारत में जो बदलाव आए हैं और फ्रांस के साथ जो रिश्तों में मजबूती हुई। अनिल, कुछ और राय अगर आप अनुमति दिए तो हम जानने की कोशिश करेंगे। आप पास में आइए। और भारत माता के जय के नारे भी लग रहे हैं यहाँ पर, जो भारतीय समुदाय के जो लोग आए हुए हैं। आप बताइए क्या कहना है, आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे यही कहना है कि पहली बात तो मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आकर। जयपुर में उनको देखा था एक बार, आई बिलोंग फ्रॉम जयपुर, और मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा। उन्होंने मार्स पे और मून पे हमको पहुँचा दिया। प्लीज़ उनसे कहिए कि हमारा वोट भी इंडिया पहुँचा दे, कि हम वोट देना चाहते हैं, बट वी कांट वोट। कभी काम, कभी क्या, कभी टिकट नहीं हो रही, बट वी वांट टू वोट। जस्ट प्लीज से भारत के प्रति एक जो लगाव है, जो भारतीय समुदाय के लोग हैं जो यहाँ कर्मभूमि फ्रांस में है, जन्मभूमि बहुत सारे लोग जहाँ पर आए हैं वहाँ पर भारत में हैं उनकी, तो ऐसे में भारतीय होने का जो एक एहसास है। और जब भारत के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री यहाँ पर आए हैं और सीधे भारतीय समुदाय के लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनको सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए इस सभागार की क्षमता से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और बताया गया है कि उससे भी जितनी क्षमता से दुगने लोग,
2000 से ज़्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर किया गया है और वही वजह है कि बड़ी लंबी लंबी कतारें हमने सुबह यहाँ बाहर देखी यूनेस्को भवन में। सुबह से ही लोग अपनी कतारों में बारी का इंतजार कर रहे थे अंदर आने का। जी अनिल, कुछ आप Okay, Shailendra, we'll leave it there. Thank you and appreciate your joining us. You take good care of yourself. We'll come back to you for more updates as and when the story develops, as and when that big UNESCO address that the Prime Minister is going to make in Paris, and a lot of people eagerly waiting to listen to the Prime Minister there in Paris. Well, now let's shift focus and let's go across live to the MSME Expo Summit at Pragati Maidan and catch some live visuals. Well, coming back to that story that we are tracking, Prime Minister Narendra Modi will arrive in United Arab Emirates in the second leg of his tour. This is the third visit of Prime Minister Modi to UAE in the last 4 years, and it is hoped that it will give a new momentum to the already existing strong ties between India and United Arab Emirates. During the two-day visit, the Prime Minister will be honoured with the highest national award of UAE, the Order of Zayed. UAE Minister of Tolerance Sheikh Nayyam bin Mubarak Al Nayyam has said that the highest national award to Prime Minister Modi is a mark of special relationship between India and UAE. He added that UAE thinks of India as a special guest friend and a respected and trusted partner. UAE President in April had announced the decision to confer its highest award on Prime Minister Modi in recognition of the pivotal role played by him in enhancing bilateral ties between the two countries to the level of comprehensive strategic relations. Pakistan has suffered another setback at the international stage today as the Asia Pacific Group of the Financial Action Task Force, that's FATF, an international anti-money laundering watchdog, has downgraded it and placed it under the list of blacklisted countries. The Asia Pacific Group, one of the 9 regional affiliates of FATF, has placed Pakistan in the Enhanced Expedited Follow-up list, also known as the blacklist, for its failure to meet its standards. Pakistan was put in the category as a non-compliant in 32 of the 40 compliance parameters. Pakistan now faces the challenge of avoiding being placed under the FATF's overall blacklist in October. It was earlier placed in the grey list by FATF. Well, for more on the story, Abhishek Jha, our correspondent, joins us on the phone line. Abhishek, good afternoon. Abhishek, give us the impact of this, it will have on Pakistan especially. And, they have time till October, but what are the avenues that are open before them? It looks like an open and shut case for Pakistan on the FATF front. Anil, it comes at a very bad timing for Pakistan, especially at a time when Pakistan is trying to garner as much financial support from the world economies or its allies and global financial institutions like World Bank, Asian Development Bank and other financial institutions. It is trying to get as much of aid, loans and long-term financial assistance from these countries. But all these countries need to check the credential of the loan that the one country who is seeking money from them, and Pakistan at a time when its credentials are being questioned at an organization of an stature of FATF is in a very bad shape, and it has clearly said that Pakistan has not done enough to counter the terror network, the trail of money that goes from various of institutions or various in form of very fake organizations in Pakistan that actually work for the financing of terror modules and terror organization, terror operatives, and the money trail is not being properly checked by Pakistani authorities, and that is one big decision of this subgroup of FATF, which has said that Pakistan must be placed under blacklist. Okay. Now Pakistan has a very limited period time of almost 2 months before the October meeting of full plenary session of FATF takes place, where Pakistan will have to defend itself that why it should not be placed in the blacklist. One should remind our audience that in the earlier occasion when FATF meeting has taken place, Pakistan tried to defend itself that why it should be taken out from the grey list, but irrespective of Pakistan's defense, FATF did not found any merit in Pakistan's defense and said that Pakistan has not done enough and it needs to be, it needs to be placed in a grey list. And in the next meeting, if we found that Pakistan has not, mend its way in terms of terror financing, it will be put in blacklist. And that was a big decision in the last meeting, and maybe in the next meeting from 2 months from now, Pakistan will have a larger challenge to defend itself. Okay. We're running short of time. Thank you and appreciate you joining us, Abhishek, with those inputs. We'll come back to you for more inputs on that particular story. Moving ahead, Union Women and Child Development Minister Smriti Irani today gave away Poshan Abhiyan Awards 2018-19. Addressing the gathering, the minister said Smriti Irani
The Minister Smriti Irani lauded the role of Anganwadi workers and said that the Anganwadi workers play a crucial role in coping the menace of malnutrition. वो महिला, वो व्यक्ति जो हर घर जाकर जीवन दान देता है, उसे सम्मानित करने का सौभाग्य आज मंत्रालय को प्राप्त हुआ है। यशोदा को कृष्ण की मां समझते हैं। उस सभ्यता में आज हमारा गौरव है कि आंगनवाड़ी की हमारी दीदी किसी यशोदा से कम नहीं। और आज अगर कंस की भांति कोई चुनौती है तो वो है कुपोषण। इसलिए आज इस शुभ अवसर पर, इस उत्सव के माहौल में मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूं कि जैसे उन्होंने कंस पर विजय पाई, वैसे ही हमारी यशोदा आंगनवाड़ी के माध्यम से कुपोषण पर विजय पाएगी। Finance Minister Nirmala Sitharaman today said that after the first 10 years under the globalized India context, people are now looking at new economy. Addressing the function to celebrate 10 years of competition law enforcement in the national capital, the minister said that competition commissioners will work on Competition Commission of India 2.0 mode. So now, after the first 10 years under the globalized India context, you're looking at the new economy, and therefore from today I would think the Competition Commission is getting into a CCI 2.0 mode. Only because, yes, the markets are opening up, but world over, you watch the developments world over, there is also a recoil of sorts. Whether it's a complete recoil or not, there is a recoil of sorts. President Ramnath Kovind today attended the first World Youth Conference on Kindness organized by UNESCO in New Delhi. The theme of the conference was Vasudhaiva Kutumbakam, Gandhi for the Contemporary World, celebrating the 150th anniversary of Mahatma Gandhi. President said that Gandhiji was a great leader and a benchmark of public functionaries, political ideas and government policies. Gandhiji remains the benchmark against which we assess our public functionaries, political ideas and government policies, as well as the hopes and aspirations of our country and our people and of our shared planet. He not only led us to freedom, but he also urged us to cherish freedom and preserve the concept of universal peace. Mahatma Gandhi was not just a great leader and visionary, he was one who personified certain timeless ideals and values. We could place Gandhiji in a time machine and transport him to any period of human existence, and we would find him to be always relevant. Speaking on the occasion, Union Human Resource Development Minister Ramesh Pokhriyal said India aims to work for peace and continuous development. गांधी जी के उस विषय को जिसको आज पूरी दुनिया को जरूरत है, शांति की और सतत विकास की, उसी मार्ग से होते हुए हम दुनिया को सुख शांति और प्रगति के पथ पर लेकर के जाएंगे। और ये दुनिया का जो युवा है, वो दुनिया का युवा इस विजन को अपने साथ लेकर के आगे बढ़े। Well, that's all we have time for in this edition of English News. Thanks for watching. Namaskar.